As we can see here, all the students are participating with their dad in fun with cooking. All the participants are here with their father. Father and brother. As you can see, all the participants are just busy with their father. Today our activity is cooking without fire. Yes, I am also. Best of luck. Best of luck to all the participants. Thank you, ma'am. Thank you. For the food also. Oh yes. बड़े हुए व्यंजन बना करके इस कार्यक्रम को सफल बनाएंगे। What is this? This is coconut powder and this is ice cream. Okay. हजारों वर्षों से फैला हुआ है और ये एक सांस्कृतिक Okay, very विकास का nice. एक उत्पाद है। Hershey's. भारतीय व्यंजनों को Yeah, what are you cooking? Okay, you are squeezing. Good. What is your dish? Cake. Okay, with cookies. Nice, nice concept. अपना आप एक प्रभाव डालती है। What are you doing? व्यापार Cake. You are making cake. Okay. विजय Okay. All the best. Very nice. Very nice. सांस्कृतिक आदान प्रदानों ने भारत What are you going to make? दिया है। Sev puri. Okay. Very good. Very good. भारत में राजस्थान में What are you making? साक्ष्य बताते हैं कि क्षेत्र Okay, में Dora cake. Very good. से ही शत्रुओं को साफ किया Okay, good. Good. Both of you are doing what? What is this? Chocolate. Okay. Very good. Very good. बलूचिस्तान में बेहद है। Nice. Nice. What is this? Cake. You are making cake. Good. What is this, Aditi? Okay. Good. Good. With your papa? What are you doing, sir? Making cake in glass. Okay. Nice concept. What are you doing? Okay, you are making cake. Good. 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 आप लोग को अच्छा लगे। Nice. What are you making, beta? Sandwich. Okay, that's good. Is this ready? What is this? Not ready. Okay. What is the name of this dish? Oreo balls. Okay. 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 प्रभावित किया और इनके दौरान जाति या धर्म के आधार पर All the fathers are very busy in cutting salad. प्राप्त करते हैं Your dish is ready. What is this? और सब्जियों के आनंददायक Okay, chips. Very good. What is this? एक धर्म द्वारा देवताओं को घरेलू चूल्हे पर पका हुआ भोजन Our director sir is also very busy as a father. और सो एक नशीला तरल पदार्थ पीने को यज्ञ में शामिल किया जाता था। गाय वैदिक युग के समाज अर्थव्यवस्था और राजनीति में केंद्रीय भूमिका निभाती थी। इसके कारण स्वाभाविक रूप से इस अवधि के पाक खजाने में दुग्ध उत्पादों का व्यापक रूप से उपयोग हुआ। अनाज और सूखे जौ दूध में पकाए जाने वाले व्यंजन को घोटाना कहा जाता था। दूध काल का प्रमुख All the fathers are very busy in supporting their children. It's a very wonderful idea. This program is organized by Sangeeta Chaudhary, our coordinator with Kalpana ma'am. बौद्ध धर्म में एक लोकप्रिय किंवदंती के अनुसार एक भक्त महिला सुजाता की कहानी का वर्णन है
जो अपनी गंभीर तपस्या के दौरान निर्बल अवस्था में पहुंचे बुद्ध को उबले हुए चावल और दूध का कटोरा भेंट करते हैं। माना जाता है कि इस भोजन से युक्त होने के बाद ही आत्मज्ञान प्राप्त करने में सक्षम हुए। ऐसा कहा जाता है कि घटना में Now meet our coordinator, Miss Sangeeta Chaudhary also. You are looking very happy today, ma'am. What is the secret? Okay, in cooking without fire. Very nice concept. Thank you. All the teachers are watching this program very curiously. देवी देवता की अपनी पाक प्राथमिकताएं हैं। उदाहरण स्वरूप विष्णु को आमतौर पर घी और दूध Now meet आधारित our coordinator Kalpana Jha also. Hello, ma'am. Thank you for organizing this program, Cooking Without Fire with Dad. So this is a very new concept for all of us. Thank you so much. How are you feeling today? So glad. Okay. Thank you. You are very excited also. हरवा भुना हुआ मुर्ग जैसे व्यंजनों का उल्लेख है और खाना पकाने की तकनीक जैसे कि दम को धीमी आंच पर खाना पकाने की तकनीक और बिरयानी तलना और भुनना का भी उल्लेख है। आधुनिक काल में भारतीय व्यंजन समय के साथ विकसित होते रहे। भारत में रेस्तरां